वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अजय बच्चा फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए जल्दी से जल्दी से। कमान आज हम आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे लिबरलाइजेशन के। कल हमने बेसिक्स बैकग्राउंड देखा था, व्हाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज नेसेसरी। राइट, आज हम देखेंगे लिबरलाइजेशन। राइट, चलिए फटाफट फटाफट से ज्वाइन हो जाए, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए फटाफट। आ जाइए। गौरव गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए सेल्फ स्टडी। आई होप सारे बच्चे साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फ स्टडीज भी कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। बिना सेल्फ स्टडी के सर वी आर नॉट गोइंग टू अचीव आवर गोल्स। चलिए शुरू करेंगे दिन। आज आज भी हम सर एक बार कल का रिवीजन देख लेंगे जल्दी से, एंड देन विल स्टार्ट। राइट, पहले हम सर लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। राइट, very good morning and welcome to Unacademy Days. Let's crack it with CBSE. Very brief introduction about me. I'm a faculty of Economics and Accounts. I've been teaching at 11th, 12th and as well as in C Foundation. And in our tenure of teaching, one thing has always remained constant, but एक चीज कभी change नहीं हुई. That is conceptual learning. That is concepts पे ध्यान देना, logics पे ध्यान देना. फिर ये चीज कभी change नहीं हुई, ना ही कभी change होगी. ठीक है, because it is very important कि हम किस पे ध्यान दें हमेशा। हम हमेशा किस पे, कंसेप्ट पे ध्यान दें, बिकॉज रट्टा हर कोई मार लेता है। रट्टा हर कोई मार लेता है, कंसेप्ट में सब डब्बा गोल हो जाते हैं। सो हमारा मकसद वही रहता है कि आप लोगों को कंसेप्ट से रूबरू कराए। राइट, चलिए ना। इफ यू न्यू बेटा, इफ यू न्यू टू एन अकेडमी, An academy क्या है? एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। It is what? It is an online learning platform where you will get to learn all your subjects right under one roof by n number of educators. Right? आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, these are totally free. But if you want that additional edge over your competitors, you can always get a subscription. You can always get what? You can always get a subscription. हाँ, इससे आप बोलिए अपनी ट्यूशन फी सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? ट्यूशन फी। ठीक, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस आइकॉनिक। ठीक, दो टाइप के हैं, प्लस और आइकॉनिक। एक एक करके दोनों के बेनिफिट देखेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले। सो लेट्स लुक एट प्लस। प्लस के कुछ बेनिफिट्स, डेली लाइफ क्लासेस मिलती है, एजुकेटर के साथ इंटरेक्शन होता है आपका। Like you get daily life classes, you get to interact with the educator
in real time then and there itself. So polls होते हैं, quizzes होते हैं. देखिए जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, टेस्ट कैसे होगा? थ्रू लाइव पोल्स एंड क्विजेस. टेस्ट कैसे होगा? थ्रू लाइव पोल्स एंड क्विजेस. ऑलराइट. तो देन आप टेस्ट सीरीज एंड उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी कर सकते हैं. राइट. टेस्ट सीरीज एंड इट्स एनालिसिस, both both can be done under plus. ठीक है, एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा सर कहाँ कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, क्या टाइम मैनेजमेंट बराबर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें कहाँ, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको क्लास में. ठीक है, डाउट सेशंस भी कहाँ आ जाएंगे सर? डाउट सेशंस भी आपको क्लास में मिल जाएंगे. राइट. आइकॉनिक के आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स है सर? आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स है सर? आइकॉनिक एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके बात करता है. वो वन टू वन इंटरेक्शन पे बेस्ड है. पर्सनल कोच. So we will be your personal coach throughout your journey. Alright. आपकी मेंटरिंग होगी. आपकी क्या होगी? आपकी मेंटरिंग होगी. आपके सारे प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गोल्स, सब चीज़ पे डिस्कशन होगा. ये सब चीज़ पे डिस्कशन होगा. एंड क्या उस अकॉर्डिंगली आपके स्टडी प्लान्स बनाए जाएंगे so that you achieve your goals. Then अब तो जो आइकॉनिक के डाउट सेशंस रहेंगे वो एक्सक्लूसिव डाउट सेशन रहेंगे. वो क्या रहेंगे? एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस रहेंगे. मीनिंग उसमें सिर्फ आप और एजुकेटर सर, और कोई बच्चा नहीं सर. क्लास में सर पर्सनल अटेंशन और कहाँ मिलेगा? इन आइकॉनिक. और साथ ही साथ जैसे कि पैरेंटल कनेक्ट सो दैट योर मेहनत इज कम्युनिकेटेड एंड सारे प्लस के बेनिफिट्स. ये सब क्या है सर? ये सब आइकॉनिक और प्लस के बेनिफिट्स है. दिस विल गिव यू दिस विल गिव यू an edge. This will give you an edge. सर आप रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें. I highly recommend that people should get either a plus or an iconic. I recommend iconic when there is plenty of time in our hand. Right, right now we don't have much, so I would recommend getting a plus subscription, be it 1 month or 3 month. ठीक है, और भी वेरिएंट्स है बट टाइम रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. राइट. आपने अभी सिंपली क्या करना है? आपने अभी एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आई स्टोर, प्ले स्टोर, जो भी सही लगे. सिर्फ वहां से ऐप डाउनलोड करिए. ठीक है, गोल सेट करना है. ठीक है, गोल सेट करना है. गोल सेट क्या करेंगे सर? गोल सेट होगा 12 CBSE. गोल क्या है हमारा? गोल चूज करेगा 12 CBSE. ठीक है, आप जैसी गोल सेट कर लेंगे यू विल बी प्रोवाइडेड विद ऑप्शंस. ठीक है, वेरिएंट्स आपके सब्सक्रिप्शंस के. हाँ,
अगर बच्चा आप 11th में हो, if you're watching this video and if you are in 11th, you can opt for the 6 variants. You can opt for 6 variants, any one. ठीक है, इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप आपके हिसाब से. ठीक है, सिमिलर तो आइकॉनिक में there are four students who are in 11th, right? But हमें इंटरेस्ट है right now जो बच्चे 12th में, right? हाँ जी. So now those who are 12th, आपके पास प्लस में 4 ऑप्शंस है, 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. Now देखिए, तो 6 months and 12 months तो ऑप्शन से ही कट गए. ये तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, ये बचा. क्यों सर, क्यों नहीं है? हमें लेना है बेटा, टाइम नहीं है होता, अभी टाइम नहीं है. ये बचा 1 month and 3 months. 1 month and 3 month ये बचे हैं. आप कोई भी एक ले लीजिए, आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा व्यू. किसके ऊपर? प्रिपरेशन के ऊपर. ठीक है, if you are well prepared and you want to revise and give your test series, ठीक है, आप उस अकॉर्डिंगली चूज करें. right? Go for 1 or 3, whichever is suitable for you, suitable as per your need. Right? Good morning, Dr. Saab. Good morning. Choose whichever is suitable. Right? I would recommend go for a 3 months. ठीक है, अगर कुछ अनसर्टेनिटी रही तो वो भी कवर हो जाएगी, और 1 month इज गुड इनफ अभी के हिसाब से. चेकआउट के टाइम पे बस ये कोड लगा दीजिएगा, SAJYT. ठीक है, क्यों? 10% ऑफ. क्यों सर? 10% ऑफ डिस्काउंट किसे नहीं पसंद? ऊपर से हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें तो डिस्काउंट के बिना नींद नहीं आएगी. ठीक है, ये कोड लगा दीजिएगा SAJYT, आपको क्या मिल जाएगा? 10% ऑफ. सो 1 month जो आपका तो 3K का था, अभी वो 2700 में मिल जाएगा, एंड 3000 का 6.5 वो आपको 5850. बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है. ठीक इसी तरीके से आइकॉनिक के है सर. आइकॉनिक में पहले 3 थे, अब 2 ही है. ठीक है, 6 and 12. राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज टाइम भी नहीं बचा है उतना. ठीक है, हमारी एग्जाम्स कब होने वाली है? फेब एंड में या मार्च में होने वाली है? होने तो वाली है फॉर श्योर. ये टाइम बचा कितना है? जनवरी फरवरी, 2 months है. ठीक है, 2 महीने हैं सिर्फ, 2 months. सो इसलिए आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ प्लस, either get a 1 month or a 3 month subscription. Right? अगर अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है तो आई वुड, जो बच्चा अभी अभी 12th में जाएगा उनके लिए आइकॉनिक इज बेस्ट. उनके लिए आइकॉनिक इज बेस्ट बिकॉज एक पर्सनल लेवल पे जाके ये सब बातें होगी, ये वन टू वन इंटरेक्शन रहता है, उनके लिए आइकॉनिक इज रिकमेंडेड. सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ प्लस 1 or 3 months, whichever you like. हाँ, नीचे एक क्या है, टेलीग्राम की लिंक है. ये नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दी गई है, मेरा उसे क्लिक करिए so that you are joined in a telegram channel. ठीक है, तो t.me/quest 12th CBSE कॉमर्स, ये क्या है? ये वो लिंक है. ठीक है, इसे टैप करिएगा, आप ऑटोमेटिकली काय में ज्वाइन हो जाएंगे.
ऑटोमेटिकली आप चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। राइट, चलिए चलिए then, शुरू करते हैं। अब सर कल का एक बार why why there was a need of liberalization, privatization and globalization? क्या आप लोगों को रिवाइज करना है एक बार कल का, या फिर डायरेक्ट शुरू करें? जल्दी बोले, रिवीजन करना है या डायरेक्ट? डायरेक्ट, ओके, ठीक है। चलिए, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था सर, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं एंड एंड का। सो वी वर इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट। 1980s के बाद से हम ट्रेस कर सकते थे। तो 1980s के बाद से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। वी वर इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। हमें कोई लोन भी नहीं दे रहा था, हमें कोई लोन भी नहीं दे रहा था। सर हालत ऐसी हो गई थी, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी क्या नहीं था, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, राइट। इंटरेस्ट पे करने के लिए भी क्या नहीं था, पैसा नहीं था हमारे पास। हाँ, हमने क्या किया? हमने क्या किया उसमें सर? वी वेंट टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंडियन मॉनेटरी सॉरी, नॉट इंडियन मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी, ठीक है। सर वी वेंट टू IMF एंड वी वेंट टू वर्ल्ड बैंक, एंड हमने उनसे सर लोन मांगा सो दैट वी कैन कम अप फ्रॉम द क्राइसिस। उन्होंने उन्होंने हमें कितने कितने का लोन दिया था? सो दोनों ने मिलकर हमें $7 बिलियन, कितना वो टाइम पे $7 बिलियन का लोन दिया था। बट उनकी कंडीशंस थी, बट उनकी क्या थी? उनकी कंडीशंस थी। उनकी कंडीशन क्या थी? उनकी कंडीशन ये थी दैट दैट सर इंडिया नीड्स टू ओपन अप द गेट्स फॉर ट्रेड, ठीक है। इंडिया नीड्स टू ओपन अप द गेट्स फॉर ट्रेड थ्रू व्हाट? थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। This was a very crux of yesterday's reading. आज हमें देखना है liberalization. चलिए, as pointed out in the beginning, rules and laws which were aimed at regulating the economic activities became major hindrance in growth and development. Liberalization was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy. Though a few liberalization measures were introduced in 80s in the area of industrial licensing, export-import policies, technology upgradation, fiscal policy, and foreign investment. Reform policies initiated in 1991 were more comprehensive. सर अभी अभी ये क्यों? सर हमने हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्यों अपनाया? बिकॉज इंडिया को अगर उसका डेफिसिट मिटाना था, सो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? फिर इंडिया को सर उसका आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसका आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट कैसे बढ़ेगा? सर आउटपुट बढ़ेगा थ्रू रिलैक्सेशन, ठीक है। जब जब
गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा एंड ज्यादा कंट्रोल किसे दिया जाएगा? ज्यादा कंट्रोल दिया जाएगा सर प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। देन एंड देन ओनली थोड़ा सा थोड़ा सा आउटपुट बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई लिबरलाइजेशन वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे उन्हें कम करने पड़े एंड 1991, ठीक है, 1991 में सर many policies came into effect which helped our private sector to grow. Okay? Let us study some important areas such as industrial sector, financial sector, tax reforms, foreign exchange market, and trade and investment sector, which received great attention in and after 1991. सर 1980s तक सिर्फ किस पे था अटेंशन? सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग पे, ठीक है। उसके बाद जो भी रिफॉर्म्स आए सर, जो भी सेक्टर्स में टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स आए वो कब आए? सर 1991 के बाद आए। Deregulation of industrial sector. Okay. We are looking at what? We are looking at सबसे पहले deregulation of industrial sector. In India, regulatory mechanisms were enforced in various ways. So control इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कंट्रोल बहुत सारी तरीकों से था, ठीक है। सबसे पहला लाइसेंसिंग के थ्रू, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that they can produce. तो बहुत सारे वेज थे जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। इवन दो क्या ओनरशिप एंड एवरीथिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट, एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी। हाँ जी। इवन दो इवन दो क्या इवन दो ओनरशिप, मैनेजमेंट, एवरीथिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बट इनडायरेक्टली कंट्रोल अभी भी किया जा रहा था थ्रू वेरियस रेगुलेशंस। सबसे पहला वाज लाइसेंसिंग, ठीक है। सर हमारे प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी करने के लिए सबसे पहले क्या लाइसेंस लेना पड़ रहा था गवर्नमेंट से, इधर इफ दे वांट टू स्टार्ट और इफ दे वांट टू क्लोज डाउन अ फॉर्म, या फिर ये भी कि कितना प्रोडक्शन करे, ये भी सब एक लाइसेंस के थ्रू, मीनिंग सो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। दीज वर सम दीज वर सम रेगुलेशंस, ठीक है। सर पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा, some goods could be produced only in small scale industries. दूसरा रेगुलेशन क्या था? दिस वाज इम्पोर्टेंट, थोड़ा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी इनिशियल डेज में, आफ्टर इंडिपेंडेंस के इनिशियल डेज में जरूरी थी, बिकॉज एक डिस्पैरिटी से बचाने के लिए ऑल दीज रेगुलेशंस वर इन एक्शन, बट as we progressed further in time, all these regulations were not necessary, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उनको क्या सर, उनको उनको ग्रोथ देने के लिए सर फिक्स कर दिया था कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही प्रोड्यूस करें, ठीक। सो इसे भी अबॉलिश किया गया, ये पॉलिसी को भी अबॉलिश किया गया। कंट्रोल्स ऑन controls on price fixation and distribution of selected industrial product, and and आखिर में सब प्राइस फिक्सेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये भी किसके हाथ में था? ये भी गवर्नमेंट के हाथ में था। ये भी कौन रेगुलेट करता था? ये भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी। इसे भी हमने उठाकर उठाकर फेंक दिया, ठीक। तो इन रेगुलेशंस को निकालना बहुत जरूरी था, बिकॉज अगर ये रेगुलेशंस नहीं जाते सो इंडस्ट्रियल सेक्टर एज अ होल ग्रो नहीं कर पाता।
The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all products. ठीक है, but few, ठीक है, but apart from few, अभी भी इन सब प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग लगती है बिकॉज इट इज नेसेसरी। कि जैसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट्स अगर आप बना रहे हो, अल्कोहल का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, सिगरेट्स, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and drugs and pharmaceuticals, अगर आप ये सब इन इंडस्ट्रीज में हो then you will require a license। एंड जो थोड़ा बहुत अभी के हिसाब से सर लॉजिकल भी है बिकॉज सर ये सारी चीज़ों का मिसयूज हो सकता है, ठीक है, तो इन पे रेगुलेशंस लगाना जरूरी है, राइट। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। एंड अभी अभी मेजॉरिटी किसके हाथ में दे दिया है? मेजॉरिटी प्राइवेट के हाथ में दे दिया है, ठीक है, मेजॉरिटी प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। अब सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर के हाथ में विच आर नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज अगेन अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाए so there can be misuse and and it can harm the safety of the nation, ठीक है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, right? Many goods produced by small scale industries have now been reserved, ठीक है। अब तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रिजर्वेशन बना के रखा था उन्हें भी हटा दिया गया। अब वो प्रोडक्ट्स सिर्फ सिर्फ स्मॉल स्केल नहीं, सारे इंडस्ट्रीज, सारे सेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड in many industries the market has been allowed to determine the prices and now it is no more fixed by the government itself। Financial sector reforms, what were the reforms in our financial sector? ये सब किसके लिए आए सर, किसके कारण आए? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF and World Bank। Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment bank, stock exchange and foreign exchange market। ठीक, सर इन सभी में there was a need of change। The financial sector in India is regulated by its central bank, that is the RBI। You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulation of RBI। The RBI decides the amount of money that bank can keep with them. It fixes the interest rate, the nature of lending to various sector and whatnot। One of the major aim of financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector। सर एक मेजर रीजन, एक मेजर रोल, ठीक है, आरबीआई का चेंज करना था फ्रॉम अ रेगुलेटर, सर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी से रेगुलेटर से हमें क्या बनना था? फैसिलिटर, एक हेल्पर बनना था, right? This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI now। The policy reforms led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign। अभी आप देखते हैं अभी, so there are many private sector banks, ठीक है, and foreign banks भी है जैसे DBS। DBS is what? DBS is not an Indian bank, it is a foreign bank, right? Foreign investment limit in banks were raised to around 74%,
Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI and rationalize their existing branch network. बैंक्स को भी क्या सर बैंक्स में भी देखिए ये क्या हो रहा है लिबरलाइजेशन ही हो रहा है बैंक्स में भी छूट दी गई ठीक है so that people can enter people can enter banking प्राइवेट बैंक्स भी सर आ सकते हैं so that it grows तो मोनोपोली ना रह जाए गवर्नमेंट के पास एंड देखिए जब और प्लेयर्स आते हैं ठीक है जब नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी कंपटीशन बढ़ेगा सो फॉर एग्जांपल अगर लोन है ठीक है अगर लोन है तो लोन विल आल्सो गेट चीप तो लोन भी सस्ता होगा कि नहीं होगा होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा सर क्वालिटी बढ़ेगी right the banks have been given permission to generate resources from India and abroad. Certain managerial aspects have been retained with government to safeguard the interest of account holder and the nation. Right? Foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds, and pension funds are now allowed to invest in Indian financial markets. सर ये क्या था सर ये हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे ये क्या थे ये हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे अब अब सब मेजर चेंजेस हुए थे टैक्स रिफॉर्म्स मेजर चेंजेस काय में हुए थे टैक्स रिफॉर्म्स 1991 के बाद से there has been serious changes which are really good for the people right देखिए टैक्स रिफॉर्म्स tax tax reforms are concerned with reforms in the government's taxation and public expenditure policies which collectively is known as fiscal policies okay now there are two types of taxes direct and indirect right direct taxes consist of taxes on income of individual as well as profit of business ठीक है जो भी टैक्स डायरेक्टली आप पे करते हो इधर आपके इंडिविजुअल की इनकम पे या जो भी फर्म की प्रॉफिट होती है उस पे से and that is what that is direct taxes since 1991 there has been a continuous reduction in the tax on individual income as it was felt that high rate of income tax were an important reason of tax evasion. It is now widely accepted that moderate rate of income tax encourage saving and voluntary disclosure of income. But high rate of taxes देखिए गवर्नमेंट पहले क्या कर रही थी गवर्नमेंट पहले हाई रेट ऑफ टैक्सेस प्रोवाइड कर रही थी ज़्यादा अमाउंट में ठीक है ज़्यादा अमाउंट में क्या टैक्सेस दिए जा रहे थे अब अगर ज़्यादा टैक्सेस कौन देना पसंद करेगा यानी सर आप जो मेहनत से कमा रहे हो उसका 40% तो भी किससे चले जा रहा था सब 40-50% चले जा रहा था गवर्नमेंट को बेफालतू का ठीक है टैक्स के नाम पे कौन देगा सो देयर वाज टैक्स इवेशंस देयर वर टैक्स इवेशंस बट फिर धीरे धीरे ये रियलाइजेशन हुआ दैट अगर हम टैक्स रेट्स कम कर दें सो इट विल अट्रैक्ट मेनी पीपल इट विल encourage people to pay tax and to save also the rate of corporate tax which was very high early has been gradually reduced efforts have also been made to reform the indirect taxes that is taxes levied on commodities it was done in order to facilitate
the establishment of a common national market for commodities. In 2016, the Indian Parliament passed a law, Goods and Service Tax Act, to simplify the introduction a unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, and create one nation, one tax. So indirect taxes में भी देखिए जीएसटी आने के पहले there were various taxes. So सर्विस टैक्स अलग लगता था, वैट अलग लगता था, ठीक है. अब इंटरस्टेट इंट्रास्टेट अलग लगता था. हर स्टेट के रूल्स अलग रहते थे. अब इन सबको क्या किया, इन सबको सब मर्ज कर दिया, ठीक है. एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सर एक टैक्स ला दिया ना. इससे क्या होगा सर, इससे ईज हो जाएगा लोगों को एंड साथ ही साथ टैक्स एविएशन भी बचेगा ड्यू टू द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. Another component of reform in this area is simplification. Yes. In order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rates are also lowered. Now, so we have seen what we have seen: tax reforms, we have seen deindustrialization, right? Now, foreign exchange reforms. अभी क्या देखने हैं? अभी देखने हैं foreign exchange reforms, right? The first important reform in the external sector was made in the foreign exchange market in 1991. As an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devaluated against foreign currency. So just to reduce the balance of payment, the rupee was devaluated. Rupee की value क्या करी गई सर, कम करी गई as against other currencies. This led to an increase in the flow of foreign exchange. It also set the tone to free the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control. देखिए सर, हमने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे थे तब हमने क्या तीन टाइप थे एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के. एक क्या था, फ्लेक्सिबल, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेट. फिर एक था फिक्स्ड और एक था हाइब्रिड, राइट. सर इनिशियली इंडिया क्या अपना रहा था, इनिशियली इंडिया फिक्स्ड रेट सिस्टम आजमा रहा था, राइट. उससे चेंज करके हम कह पे आए सर फ्लोटिंग, एंड अभी करेंटली कह पे हाइब्रिड पे. अभी करेंटली हम है हाइब्रिड पे. सो इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम फिक्स्ड टू फ्लोटिंग, meaning the rate was allowed to be determined by the foreign exchange market. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू सर इट वाज नाउ डिसाइडेड. The trade and investment policy reforms. ठीक है, अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या, the liberalization of trade and investment regime was initiated to increase international competitiveness and also foreign investment and technology into the economy. The aim was also to promote efficiency of local industries and adopt modern technology. अब ट्रेड रिफॉर्म्स लाने का, ट्रेड रिफॉर्म पॉलिसीज लाने का मकसद ये था ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बढ़े, ठीक है, among the local when foreign competitors enter, ठीक है, so they have their edge, ठीक है. एंड इससे क्या होगा सर, आपस में
फिर आपस में एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा एंड प्राइजेस विल मूव अकॉर्डिंगली. ठीक है. In order to protect domestic industries, India was following a regime of quantitative restriction on import. Right? This was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs very high. These policies reduced efficiency and competitiveness, which led to slow growth of manufacturing sector. So the trade policies aimed at dismantling of the quantitative restrictions, reduction in tariffs, and removal of license procedure. Excuse me, guys. सर ये सारी चीज़ों को हटाना ज़रूरी था. अगर हमें क्या चाहिए था, अगर हमें ग्रोथ चाहिए था, ठीक है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. बिकॉज अगर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे, so it will be difficult to have a competitive edge and a healthy competition. Import license was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. Quantitative restrictions were also fully removed in 2001. Export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market. Right? So this is it, guys. This is it. So this was liberalization. This was what? This was liberalization. Now, आप लोगों के लिए सर एक गुड न्यूज़. आप लोगों के लिए क्या? आप लोगों के लिए गुड न्यूज़. Now you can unlock the free content on the Unacademy using the code. कौन सा सर? हमारा क्लास का जो कोड रहता है वही यूज करके SAJYT. ठीक है. You can unlock the free content using that code. आप जाइए स्पेशल क्लास के सेक्शन में and click on any lecture that you want to see. ठीक है. And simply enter the code SAJYT and that particular course will be unlocked for you. ठीक है. यही कोड यूज हो सकता है सर टेस्ट किसके लिए? क्विजेस के लिए. क्विजेस अटेंड करने के लिए भी यही कोड यूज हो सकता है. राइट. चलिए सर यही कोड आपने यूज करना है कहीं के लिए? क्विज अटेंड करने के लिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई होप यू हैव अ गुड डे. राइट. आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम पे 9 बजे. ठीक है. टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. राइट. एंड जाते जाते एक रिमाइंडर, प्लीज, टाइम इज मनी एंड हमारे पास टाइम अभी काफ़ी कम बचा है. आई वुड सजेस्ट टू amp up your preparations. ठीक है. I would highly suggest get a 1 month or a 3 month of plus. कोड लगा दीजिएगा. ठीक है. 10% ऑफ मिल जाएगा. सिंपल सा है, सिंपल सी बात है. राइट. चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. आपसे कल मुलाकात होगी इसी टाइम 9 बजे. कितने बजे? 9 बजे. एंड हमारी स्पेशल क्लासेस कितने बजे रहती है? स्पेशल क्लास रहती है हमारी, तो स्पेशल क्लास कितने बजे रहती है? 7:30 बजे. सो आप लोगों से स्पेशल क्लास में भी मुलाकात होगी ऐसी मैं आशा रखता हूँ. है कि नहीं? चलिए. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. मुलाकात करेंगे जल्द. टेक केयर.